friends, welcome to Abhilaw, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish Patnigere, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, we are discussing chapter 13, which talks about jurisdiction. In the previous lecture, we have completed section 185. Today in this video, we are going to learn from section 186 to section 189. आइए हम देखते हैं सेक्शन 186 से 189. सेक्शन 186, हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट district where inquiry or trial shall take place. Now one thing we should remember, suppose if the two courts have taken the cognizance, then there is going to be a problem. Who has the power will be decided by the High Court. This is what section 186 says, where two or more courts have taken cognizance of the same offence and a question arises as to which of them ought to inquire into or try that offence. The question shall be decided. Now, A, if the courts are subordinate to the same High Court, बाय दैट हाई कोर्ट. मतलब एक हाई कोर्ट के नीचे अगर वो दो कोर्ट है और उनमें कंफ्यूजन है कि कौन ट्रायल लेगा इसका, तो कौन डिसाइड करेगा ये मैटर? हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि विच कोर्ट इज गोइंग टू ट्राई. बी, इफ द कोर्ट आर नॉट सबऑर्डिनेट इन द सेम हाई कोर्ट बाय द हाई कोर्ट. आपको तो मालूम है हर स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होता है. अगर ये मैटर दो स्टेट में चलता होगा तो कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि तो अभी हाई कोर्ट अलग अलग हो गए. देन बाय द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज appellate criminal jurisdiction, the proceeding were first commenced and thereupon all other proceedings in respect of that offence shall be discontinued. मतलब जहाँ पर commencement पहला हुआ proceeding का वो कोर्ट ट्राई करेगा, वो हाई कोर्ट जो उसका appellate authority है वो उसको डायरेक्शन देगा और जो दूसरे proceedings थे वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे. ये हो गया सेक्शन 186. आइए हम देखते हैं सेक्शन 187. पावर टू इशू समन्स और वारंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल ज्यूरिडिक्शन. अगर लोकल ज्यूरिडिक्शन के बाद जो कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है उसके ज्यूरिडिक्शन के बाद अगर कुछ ऑफेंस हुआ है और उस मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन विद हिज लोकल ज्यूरिडिक्शन हैज कमिटेड एन ऑफेंस whether within or outside India, an offense which cannot under the provision of section 187 to 185 both inclusive or any other law for time being enforced, be inquired into or tried within such jurisdiction, but is under some law for the time being enforced, triable in India, such magistrate may inquire into the offence as it has been committed within such local jurisdiction and compel such person in the manner hereinbefore provided to appear before him and send such person to the magistrate having jurisdiction to inquire into or try such offence, or if such offence is not punishable with death or imprisonment for life, and such person is ready and willingly to give bail to the satisfaction of the magistrate acting under this section, take bond with or without surety for his appearance before the magistrate having such jurisdiction. इसमें क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति है जो किसी कोर्ट के लोकल ज्यूरिडिक्शन में रहता है लेकिन उसने ऑफेंस जो किया है वो उसके ज्यूरिडिक्शन के बाहर है और ये ऑफेंस जो है ये जो प्रोसीजर है ये अंडर सेक्शन 177 और 185 के प्रोविजन में नहीं आती हो तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? मैजिस्ट्रेट सेक्शन 187 में क्या करेगा? inquire into offence committed outside his local jurisdiction, even if it is committed outside India, found within his local jurisdiction, if his person is staying within his local jurisdiction. He will compel him to appear before him, number one. Then he will grant him bail if the offence is of not of life imprisonment or of death. And if he is willing to be tried, then he will try the case. Otherwise, he will give him a bail and send him to that magistrate whose local jurisdiction the offence has been committed. Okay. So this is what section 187 talks about. Subsection 2 of 187, when there are more magistrate than one having such jurisdiction and magistrate acting under this section cannot satisfy himself as to the magistrate to or before whom such person should be sent or bound to appear, the case shall be reported to the order of the High Court. मतलब एक से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट के लोकल ज्यूरिडिक्शन में ऑफेंस अगर हुआ है और जो जहाँ पर वो आदमी रहता है
वो लोकल ज्यूरिडिक्शन के मैजिस्ट्रेट को अभी पता नहीं किसके पास भेजना, एक्स के पास भेजना या वाई के पास भेजना। ऐसे टाइम 187 सबसेक्शन 2 कहता है कि वो ऐसे केस को मैजिस्ट्रेट है हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। आइए हम सेक्शन 188 देखते हैं। ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ऑन द हाई सी और एल्सवेयर by a person not being such citizen on any ship or aircraft registered in India, he may be dealt with respect of such offence as if he has committed at any place within India at which he may be found। आपको तो मालूम है आईपीसी का प्रोविजन, आईपीसी कहाँ लागू होता है। इंडियन सिटीजन ने कहीं पर भी ऑफेंस किया हो इंडिया में वो ट्राई हो सकता है, या अगर वो हमारा सिटीजन नहीं है लेकिन उसने ऑफेंस किया हमारे एयरक्राफ्ट पर या हमारे शिप पर जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, देन ही कैन बी ट्राइड इन इंडिया। ये उसका कहना है। प्रोवाइडेड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर no such offences shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना बहुत जरूरी है। देखिए इसको मैंने ब्रेकअप किया है। सेक्शन 188 गिव्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर्स टू द मैजिस्ट्रेट ऑन इंडियन सिटीजन कमिटिंग एन ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, ऑन नॉन सिटीजन हु इज नॉट इंडियन सिटीजन बट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑन द रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। थर्ड, इसके लिए ही रिक्वायर्स द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेक्शन 188 हो गया। हम लास्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 189, रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंस committed outside India। When any offence alleged to have been committed in a territory outside India is being inquired into or tried under the provision of section 188 of the central government, may, if it thinks fit, direct that copies of deposition made or exhibit produced before the judicial officer in or that territory or before a diplomatic or a consultative representative of India in or for that territory shall be received as the evidence by the court holding such inquiry or trial, in any case in which such court might issue a commission for taking evidence as to the matter to which the such deposition or exhibit relate। 189 provides a special rule of evidence. Copies of deposition before judicial magistrate officer in concerned foreign court as an evidence is in such case। Means foreign court पे जो deposition दिया है we can consider it as a matter of evidence in our trial court। I hope so I have completed chapter 13 explaining you 186 to section 189। अगर हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलना। योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। थैंक यू। वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज चैप्टर 14।